श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री यमुना महारानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी Hare Krishna and our humble obeisances to all the attendees who've gathered here to listen to the Shrimad Bhagavatam Katha. I heartily welcome all the senior Vaishnavas from the International Society of Krishna Consciousness Iskcon and all the listeners who have gathered here in huge numbers through all the parts of the world, through the medium of Zoom, YouTube, Facebook, etc. And then with the only one goal to get the love of the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna, who have organized this katha from US, Florida, the whole Patel family, Ramataji, Jai Shri Mataji, Pratik Bhai, Darshana Mataji, Kulin Prabhu, and Kamlesh Bhai, Arpana Mata. I welcome you all on the fifth day of the 321st Katha and our humble obeisances at your lotus feet, Radhe Shyam. विशेष स्वागत करते हैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी से पधारे हुए I especially welcome Shyamanand Prabhu from Sydney, Australia. शनिवार है, छुट्टी है, इसलिए आ गए हैं। As today is Saturday, it's leave. That's why he's here. So परम सौभाग्य, We are extremely fortunate श्री यमुना महारानी की कथा that we are able to listen to the glories of Sri Yamuna Maharani from Shrimad Bhagavatam. ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। It's a great fortune to listen to Krishna Katha, or the pastimes of the Lord, and it is far greater fortune to listen to the glories of her beloved Radha Rani, and it is far, far more fortunate, extremely fortunate, to listen to the glories of the servitor of Srimati Radhika Rani, Sri Yamuna Maharani, and to seek the shelter of her and to achieve the purest of the Krishna Prema. We are all assembled here to listen to the Bhagavatam Katha. Although Lord Shiva carries Ganga ji on his head and she doesn't stays there for long. And as soon as the water flows from his hair and it goes away from him. But Devadidev has situated Yamuna ji in his heart, and that is the reason that Shankaracharya in the form of Lord Shiva in the form of Shankaracharya came and wrote down not only one but two Yamuna Ashtakam. The Yamuna Ashtakam that he wrote is uncomparable. Nobody can dare
to find even one fault or imitate him. And each and every word I was singing, you might have noticed, was perfect. The grammar, the everything was in perfect place. So, so yesterday, you might be thinking that yesterday you said Vallabhacharya, now you're saying Adi Shankaracharya. So have you ever had prasadam on Satyanarayan Katha? So the sweet that is offered, it has all types of nuts and get one a nut of everything. So I am offering you the sweet, and it has so many components. So I am trying to gather all the interpretations and mellows of all the acharyas, and this is my humble trial to present before you the interpretations. So Shankaracharya ji wrote two Yamuna Ashtakams, and every word he has used is beautiful and carries so much weight. It's so beautiful. भास्कर वाहिनी जानवी संगीनी सिंधु सुते मधुपुरी मधुरी पुभूषणी माधव तोषिणी गोकुल भीति विनाश कृते जगदघ मोचनी मानसदायिनी केशव केलिनी दान गते जय यमुने जय भीति निवारिणी संकट नाशिनी पावय माम मधुवन चारिणी भास्कर वाहिनी जानवी संगीनी सिंधु सुते। अद्भुत है, बहुत सुंदर है। Marvelous. And if I try to justify, then one word will be interpreted in 1 hour. जगदग मोचिनी मानस दायिनी केशव केली निदान गते जय यमुने जय भीति निवारिणी संकट नाशिनी पावय माम। हे संकट नाशिनी, हे भीति वारिणी, हे यमुना, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। Oh Yamuna Maharani, you be glorious. So if we start with the grammar, then the fourth line would be the first line. मतलब श्रीपाद शंकराचार्य यमुना महारानी की जय जयकार कर रहे हैं। He is singing the glories of Yamuna Maharani. यमुना महारानी की जय हो, यमुना महारानी की जय हो। बहुत वर्ष पूर्व एक आचार्य के मुख से हमने सुना था। A few years back, I heard from one of the acharyas. इंसान की जय जयकार, मनुष्य की जय जयकार in this world, the praises of a human being is never performed or done. इंसान यदि जीतता है
if a उसके person सामने wins, कोई तो हारेगा, then somebody will lose जैसी in front हार of him. इंसान की नहीं होती, क्योंकि So, इंसान जीतता है तो एक पक्ष हारेगा तब एक पक्ष जीतेगा ना। वास्तव में जय जयकार भगवान की होती है, so that is the reason the क्योंकि praises or भगवान Jai जब Jaikar can जीतते हैं, only or should be परमात्मा of जब the जीतते Lord. हैं Because तो when the सबकी Lord जीत मानी wins, जाती है। then everybody wins. परमात्मा सबके हृदय में बैठे हैं, Because मेरे हृदय में, He आपके हृदय is में, पशु sitting पक्षी जीव in the जंतु heart of सबके हृदय में every living परमात्मा है। entity यदि as परमात्मा की Paramatma. जय जयकार हो And तो if सबकी जय जयकार, the praises are done of यदि the मेरी होगी Paramatma, आपकी then जय जयकार तो कुछ ना everybody कुछ will दोष be होगा, praised or कुछ कमी have. होगी, क्योंकि मैं जीता तो विपक्ष हारा, If I और win, जहां हारा then वहां somebody द्वेष, else lost. वहां राग, And then वहां प्रॉब्लम। when there is a loss, there might be इसलिए जय जयकार जो है ना, एक और मात्र envy एक भगवान की होनी चाहिए, and jealousy. और So भगवान that is the स्वयं reason that यमुना महारानी की होनी Jaikar चाहिए। should be done of जय यमुने, दो दो बार the जय जय Lord and शब्द, Yamuna जय Ji. यमुने So जय twice भीति Jai निवारिणी, Jai is used हे here. माँ यमुना आपकी जय जयकार। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम हमारी जय जयकार करना चाहते हैं, Some people say तब that तो we हमारी want to जय lord it over, जयकार we want the करने से praises या for बोलने से ourselves. कुछ नहीं मिलने वाला, So if we are praised, परंतु हम then we भगवान की might जय not जयकार achieve करेंगे ना, anything. तो But अपनी जय when we जयकार अपने praise the आप हो Lord, जाएगी। then श्री we प्रहलाद will महाराज एक सुंदर automatically दृष्टांत get देते हैं praise. Prahlad कि Maharaj gives a सुबह उठते beautiful हो मिरर के example. सामने खड़े रहते हो, He says that if हमारी you वैष्णव stand in माता को तो ये बहुत front अनुभव है, of the mirror, बहुत अच्छा मेकअप करती है, तो आप मिरर के सामने खड़े रहकर, मिरर में आपका प्रतिबिंब है, राइट, and if you see your मिरर reflection को in जो the प्रतिबिंब mirror, दिखाई दे रहा है उसको मेकअप करेंगे, so if you तो try to केवल put makeup on the आपको दिखेगा, reflection आपके ऊपर नहीं on the आएगा। mirror, then it will not लेकिन come आप to your अपने face. ऊपर मेकअप कर लो But तो if you आपका put मुख भी मेकअप हो जाएगा और makeup मिरर on का your भी मेकअप हो face, जाएगा। then automatically it will ठीक be इसी प्रकार reflected मुंह को on तभी the mirror. परमात्मा का मेकअप So, किया जाए similarly, तो if we आत्मा का मेकअप decorate अपने आप हो जाता है। Paramatma, the Lord, ईश्वर की then जय जयकार होगी automatically we will तो get हमारी जय जयकार अपने आप the हो जाती है। praise सो हमें भगवान की जय जयकार और or भगवत स्वरूपा appreciation. यमुना महारानी की जय जयकार करनी So, चाहिए। we should praise and ओके, तो हम appreciate ध्यान Yamuna से शुरू Maharani. करें। So, let's start क्यों from नहीं the यमुना beginning महारानी की जय जयकार करते हैं? कथम that प्रीतम यमुना, we कैसी है should यमुना, praise Yamuna एक एक Maharani. शब्द में And how महत्व is जोड़ रहे she? हैं। Each and सबसे every पहले कहते word हैं gives a beautiful meaning here. मधुवन चारिणी भास्कर वाहिनी जानवी संगीनी सिंधु सुते। सबसे पहला शब्द है मधुवन So the चारिणी। first word is Madhuvan यमुना महारानी Charini. कैसी है? So how मधुवन is चारिणी। Yamuna Maharani? तो पहले इस शब्द के ऊपर थोड़ा सा समझे। So let's यमुना concentrate महारानी interpreting this word. मधुवन में चारिणी माने विचरण करने वाली So है। she is the one who अब roams जैसे in ही आप सुनते Madhuvan. हैं कि यमुना महारानी मधुवन चारिणी, मधुवन में विचरण करने वाली, So as तो soon as we सीधा hear that वृंदावन याद आता है। she वृंदावन में roams मथुरा में in मधुवन Madhuvan, है then और we मधुवन में remember वृंदावन Vrindavan है, because और उसी Madhuvan मधुवन is में in प्रभु Vrindavan, महाराज गए थे, and there यमुना में स्नान किए, यमुना का she आश्रय roams, लिए and there और Dhruv 6 Maharaj महीने went तपस्या में and भगवान he को took प्रकट the किया। shelter of कल हम her, विस्तार से सुनेंगे। and तो श्रीमद् भागवत जी for में 6 मधुवन months का did वर्णन है austerity on the कि banks of वृंदावन में Yamunaji. मधुवन, लेकिन भक्तों रामायण में भी मधुवन है। But there is one Madhuvan in महाभारत Ramayan में as तो well. सब लोग जानते हैं, So the Madhuvan in हमारे Bhagavatam we all are महाभारत aware. ग्रंथ, But सब लोग लगभग 10-10 बार तो राम कथा सुने होंगे, लेकिन आधे लोग भी नहीं जानते होंगे कि but रामायण में भी मधुवन people का might have वर्णन heard है। and listened to the Ram Katha, but most of रामायण में मधुवन might का not be वर्णन है। aware that चलिए there is थोड़ा a सा एक Madhuvan चक्कर मारते हैं। in Ramayana. So आप लोग let's जानते हैं हनुमान जी महाराज go to Ramayana. सीता को खोजने के लिए लंका गए। So
Hanumanji went और to लंका जाकर find Sita ji, उन्होंने and in Lanka लंकिनी का वध किया, he killed विभीषण से demon मुलाकात Lankini, हुई, and he met Vibhishan फिर ji देवी सीता से मुलाकात हुई, and Sita रावण ने Maharani. बगीचे को छिन्न भिन्न कर दिया, He destroyed the gardens of पुत्र अक्षय कुमार Ravana. को मार दिया, He killed his फिर son मेघनाद Akshay बांधकर Kumar, हनुमान जी को रावण के and सामने खड़ा करता है, Meghna tied finally रावण him के साथ and brought him in संधि front of करके Ravan. There they had a तुरंत heated ही रावण argument or हनुमान को discussion, मारने का प्रयास करते हैं, विभीषण के and कहने पर Ravana हनुमान tried जी to पूंछ kill चढ़ाते हैं, Hanumanji, but on the suggestion of फिर Vibhishan हनुमान ji, जी he महाराज just burns जली the हुई tail पूंछ से of Hanumanji, सारी लंका में आग लगा and देते with हैं, that burning और tail, आग लगाकर अब देखिए थोड़ी सी रामायण he की हम burns the whole आस्वादन Lanka. करें तो रामायण में वर्णन है, So there is a reference in Ramayana मधुवन present चारिणी शब्द पर चर्चा हो रही है, in front of your तो screen in the रामायण में below कहा चलत screen. महाधुनि You गर्ज जैसी भारी, हनुमान जी महाराज लंका में noted down that we are talking about or discussing about Madhuvan Charini here. आने के लिए चलत महाधुनि गर्ज जैसी, मतलब गरजते हुए हनुमान जी की गर्जना थी, जय श्री राम बोलकर जब उड़े हैं, So Hanumanji flew by saying Jai Shri Ram, तो गर्भ स्त्रवहि सुनि निश्चिचर भारी, वे राक्षस कुल की जो नारियां थी, स्त्रियां थी, जो गर्भवती and नारी थी, all गर्भ प्रसव हो गए, the family or women of the demon सिंधु यही पार ही आवा, l- शब्द किल किला lost their kids in miscarriages. और फिर एक ही छलांग मारकर हनुमान जी महाराज And in one single leap, भारत में he वापस crossed the sea और and जैसे reached भारत to में India वापस or आए, Bharat. And as soon as he रामायण में कहते came हैं back, it's वत्स mentioned in Ramayan, हरे कृष्णा कृष्णा हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। ये जितने भी वानर थे वो हनुमान जी की राह देखकर बैठे थे, all these हमारा बंदा लंका में गया, monkeys were waiting for Hanumanji that when he will return back from Lanka. घर चले गए होते, लेकिन हनुमान जी ने कहा था देखो जब तक मैं वापस न लौटूं आप सब लोग यहीं पर बैठे रहना, और जब मैं वापस लौटूंगा तब हम सब साथ में राम जी के पास जाएंगे और रामचंद्र को हम समाचार देंगे। And when will we get the news and give it to Ramji? कि सीता को खोजने का Hanumanji यश had a thought मैं अकेला नहीं लूंगा, सीता जी को खोजने का यश मैं मेरे that I should not get the मैं मेरे सारे मित्र मंडली को दूंगा। नहीं तो हनुमान जी कह सकते ना appreciation of finding Sita Maharani all alone. फिर हनुमान जी अकेले यश लेते, लेकिन महान व्यक्ति की ये महानता है, काम तो स्वयं करता है लेकिन उस कार्य का यश वो दूसरों But को देता है। person who is noble doesn't take credit all for himself, but he shares with others. हनुमान जी को And Hanumanji gave that उन वानरों का दूसरा जन्म प्राप्त हुआ हो ऐसा ऐसा appreciation to everyone. मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीने सी रामचंद्र कर काजा। सबके मन प्रसन्न हो गए और फिर मिले सकल अति भये सुखारी, तब फत मीन पाव जिम्मेवारी। हनुमान जी के विरह में ये जाम्बवंत अंगद ये जितने भी वानर थे मानो वैसे ही हो चुके थे जैसे बिना जल के मछली की स्थिति हो जाती है। So all these monkeys were restless and were worried in absence of Hanumanji, and they were waiting anxiously for Hanumanji.
And as soon Hanumanji came, they came to Ramji and they were discussing. मधु फल खाए. अब हनुमान जी ने रास्ते में कहा कि देखो So मैं जब Hanumanji in the path said that I haven't eaten anything since I went to Lanka. So they said that you could have eaten there. So he said that I'm a pure vegetarian and they are all non-vegetarians. I couldn't eat there as there was nothing vegetarian for us. So Jamvanji and Angaji said that there is a beautiful Madhuvan of Sugriv ji. So we are talking about the Madhuvan Charini here. We are discussing the reference from Ramayan. So they didn't went straight to Ramji, but they went to the gardens of Sugriv ji's garden, his personal farmhouse, and there they ate sweet fruits. So Sugrivji had a tight security in that garden or Madhuvan, and so the people who were guarding the place, they became angry. बोले दो पांच को मुष्टिक का प्रहार किया. And Hanumanji attacked them with his fist. सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करि आये प्रभु काज. वो जो सिक्योरिटी वहां पर थी वो So the सुग्रीव guards who were guarding the garden, they went to Sugrivji and said that there was a mishap and some monkeys are there in Madhuvan and they are eating fruits from the Madhuvan. And when Sugrivji heard that somebody is there in Madhuvan and eating fruits, he was not distressed or unhappy. He was extremely elated and happy because he knew that nobody has an authority or power to pluck the fruits from Madhuvan. And the only one who can pluck the flowers, fruits from the Madhuvan only when somebody has seen Sita Mai and have crossed Lanka. So he says that if Hanumanji wouldn't have met Sita ji, then they didn't had any power to pluck fruits from Madhuvan. So now they are plucking the fruits from Madhuvan. That means they have already found Sita Maharani. And thinking about this, and they joined them. Everybody gathered with to Sugrivji's place, and Ramji also came there, and everybody gathered there. So there is a small pastime. So there are some senior devotees who say, "Oh, we found Sita ji." So so they went before everybody else to take the credit that we searched Sita ji. Hanumanji was lagging behind, and everybody else was in front and saying that we have found Sita Maharani, and they were all discussing.
And by the time Narad Muni arrived there, and he said that, can you come, Hanumanji, can you come in a corner? So they all were discussing with Ramji, and Naradji took Hanumanji in a corner, and he said that you are not a devotee of the Lord. And Naradji said, you're not a devotee. Hanumanji said that I am the servant of Ramji. My whole life is surrendered to Ramji. How can he say that I am not a devotee? So Naraji said that I can prove that you're not a devotee of the Lord. So he said that, okay, please prove it. He said that, have you read Ved? And Hanumanji is the knower of all the Vedas and knowledge. So he said that there are 6 types of coward people according to the Vedic philosophy. So the one who kills children, women, or one who doesn't have a weapon, or who burns somebody's home, he is far beyond a devotee, but he is a coward, violent person, and such person should be killed. So you are not a devotee. Naraji is well aware that there is no one comparable to devotee of Lord Sri Ram than Hanumanji. Actually, he wanted to listen to the glories of Ramji through the mouth of Hanumanji. So Naraji said that I agree that nobody should burn someone's home. So there are 2 meanings of this. To put fire in somebody's home, it has more 2 meanings. First is some one is to manipulate, and by manipulating and t- telling them that you should not work so hard and take care of the family, and then they just try to put misinformation among the relatives and friends, etc. And the other is to straight away burn somebody's home with fire. So it's mentioned in the Vedas that you are a coward because you have burned the Lanka. So Hanumanji is the Lord of wisdom. He says that I am the devotee of the Lord, and there is one important responsibility for a devotee of the Lord or Ram. So that the responsibility is that if there is some dead body which is unattended, then a devotee should do the last rites for that person so that they could get a better life in the next birth. If the last rites are not done perfectly, then they might not get the Sadgati, and they might suffer. So in Lanka, already they were dead. So I just did their last rite. So Naraji said in Gujarati that they were all alive. They were nobody was dead among them. So Hanumanji
says that it seems that you haven't read the Vedic philosophy correctly. What is mentioned in the Vedas and Bhagavatam? So Naraji said this verse in front of your screen. So Hanumanji says to Naraji this verse. वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभि प्राणन्ति शुभन्ति पूनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता शवशोभनागता। ध्यान से समझिएगा, ये हनुमान जी का श्लोक है। Understand carefully. लेकिन हनुमान जी ये श्लोक टांग देते हैं। So this is the verse that Akrurji mentions, but here Hanumanji refers this one, and he says, जो व्यक्ति यस्य माने जो व्यक्ति yasya means the person, सुमंगले वाचो, वाचो माने जिनकी vacho mano means भगवान का नाम लेती है, the people who use their tongue to chant the holy names of the Lord. वाचो विमिश्रा, जिनकी वाणी से भगवत नाम मिश्रित होकर निकलता है। So those whose tongue is used to speak the Bhagavatam or the glories of the Lord, so those who chant the holy names of the Lord, and it can destroy all kinds of sins. And then Sumangale, so those who chant the holy names have their life become all auspicious, Mangal. And moreover, those who chant the glories of the Lord, they purify the whole world. So the main point here, so Naraji said that they were all alive, they were not dead, and you have burned them all. So Hanumanji says here, those who don't chant, दूसरी लाइन के बीच में क्या लिखा है? So yastu virakta, but that means that those who don't chant the holy names of the Lord, those who don't chant the holy names of Lord Krishna or Ram, then they are shav means dead, and they are, it's the decoration of a dead body. So those who don't chant the holy names, they are equivalent to dead. So Naraji, you say that they were all alive, but according to the Vedas, a person who doesn't chant the holy name is equivalent to dead. He is considered as dead. And in Lanka, the inhabitants of Lanka never chanted the names of the Lord. So they were all dead. So that is why I burn. And what did Shivji said in Kailash? Let me refer you that as well. जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते ही प्राणी।
कैलाश के शिखर पर शिव जी ने पार्वती से कहा Shivji said this to Parvati ji that those who don't have the bhakti or pure devotional service towards the Lord in their hearts, although they are, if they are humans, but yet they, although they are alive, they will be considered as good as dead, because they are devoid of the pure devotional service towards the Lord, that is bhakti. कि तुमने इतने लोगों को जला दिया, दूसरों को जलाना महापाप है। तब हनुमान जी कहते हैं मरे हुए को जलाना ये हमारा कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि दूसरा जन्म तो So अच्छा। Naraji said, तुमने मरे हुए को जलाया। Hanumanji said that it is our responsibility to do the last rites of the dead, and those who don't glorify or chant the holy names are equivalent to dead, and it's best to burn them. So Naraji says that yes, you are pure devotee. So with this we get a philosophy that our life, if it is devoid of pure devotional service of the Lord, if we don't chant or we don't listen to the Hari Katha, then we are as good as dead. Shukdev Goswami says, a dead person doesn't breathe, but they are breathing. So how can they be considered dead? So he says that even the ornament, the hammer of the Iron Man also breathes, but it is not considered as living. Similarly, a person who doesn't chant is equivalent to death. So we are discussing the Madhuvan from Bhagavatam and Ramayana. Further, Sripad Shankaracharya adds, he says Bhaskar Vahini. दूसरा शब्द है भास्कर वाहिनी। यमुना महारानी कैसी है? So how is Yamuna Maharani? Second word, Bhaskar Vahini. So Vahini means vehicle or to carry or to preach or expand. तो यमुना महारानी कैसी है? भास्कर माने भगवान सूर्य। यमुना महारानी So Yamuna कीर्ति का ji विस्तार करने वाली is the one who glorifies her parent or father's home, that is Suryavansh. So there are only two Vansh, that is Somvansh and Suryavansh from Brahmaji. And Suryavansh was glorified by Yamuna Maharani. So, so Vistar doesn't mean only to give birth to children, but it can be also expanded by glorifying, by doing such deeds that glorify our family and ancestors. And that can be done through our behavior by loving and devoting our lives to the devotional service of the Lord, the family that we have been bought. So we should also try to expand the magnificence of that family. And when we get initiated from the Guru, we should try to do something that glorifies my Guru Maharaj in all the worlds. So that should be our prayer and mellow. So that is why it's mentioned Bhaskar Vahini. जानवी संगिनी सिंधु सुते। भगवान शंकराचार्य, शंकरो शंकराचार्य, शिव जी Shankaracharya ji says Janvi Sangini
Who is Janvi? Who is Yamuna ji? जानू ऋषि की गंगा से प्रकट So हुई Janvi जब is जब माँ the गंगा river ब्रह्मलोक Ganga, से चली which मतलब ब्रह्मलोक से कैलाश शिव जी की started जटा from शिव जी Gangotri, की जटा से कैलाश from तक Brahmalok उतरी to और फिर गंगोत्री Shivji's से head, हिमाचल and हरिद्वार from होते हुए Kailash then जब to आगे बढ़ी Gangotri, and then she तो was गंगा moving का जो further. प्रथम प्रवाह उनका चल रहा था So when she was in तो her first जानू ऋषि की flow, कुटिया थी और गंगा she के प्रवाह में बेचारे जानू ऋषि की कुटिया बह गई अब she एक साधु went से एक कुटिया near बनाना the था वो भी hut गंगा के of प्रवाह में चला गया Janu Rishi, जानू ऋषि and क्रोध उसका the क्रोध आ hut गया हाँ? was आधा जीवन कुटिया में destroyed बीता भजन करूं कि कुटिया बनाऊं इतना because क्रोध of the आया flow of कि भाई Gangaji, ये है and he कौन got क्योंकि गंगा so पहली बार धरती angry पर उतरी थी because जानू ऋषि Gangaji फिर was भी गए सीधा manifesting for the 3 दिन first time on this બાકી earth, કતી and નહોતી કરી નાખી Janu Rishi બધું નહોતું થઈ ગયું ભાઈ ભગવાન drank all the water of Gangaji, પ્રાર્થના કરી and મહારાજ she हमारे became साथ non हमारे existent. पितृ वहां Nobody बैठे could हैं make out whether she's there or not. दुर्गति में फंसे हैं गंगा को रिलीज कीजिए तब भगीरथ जी So, की प्रार्थना से on the जानू prayers of ऋषि उस Bhagirath गंगा को ji, पी गए और उस Janu गंगा से मुक्ति मिल गई Rishi फिर आगे गंगा बढ़ी इसलिए गंगा का एक नाम हुआ gave her जानवी back जानवी from ऋषि के his द्वारा thigh, उत्पन्न हुई and that इसलिए is the जानवी reason हुई she जब is का अर्थ also है called जानवी Janvi, जानवी माने गंगा because she संगति re-manifested गंगा कौन from है माँ गंगा की Janu संगति Rishi. माने माँ गंगा की And सखी here है it is mentioned that गंगा की Yamuna ji is सखी a है friend of किसी Janvi भी or व्यक्ति River का Ganga. परिचय उनके So मित्र से होता है any person's अगर introduction किसी से is मन best जोड़ना है done कुछ करना है by तो किसी का ज्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं आप seeing इतना their देखिए friend वो किसके circle. साथ उठता बैठता है So if you just इसका see संग क्या है with इसका whom सहवास they क्या है associate, उसी से पता you लग will जाएगा get to वो know किसका what kind मित्र of a है person he or she अब is. यमुना की सखी उनकी संगिनी So जानवी Yamuna माँ ji's गंगा friend is Ma Ganga. और कथा भी आती है ना गंगा यमुना अनेकों And, बार मिलती है वो गंगा and there are अपने quite तट past times बोलती they, है यमुना they से both कि meet each वैष्णव other. भगवान तो And, तेरे तट पर जन्म लिए सारी and लीला तेरे तट Yamuna पर ji होती says है that मेरे तट he पर तो this होता ही नहीं है तो all यमुना the जी ने जाकर leelas कृष्ण को are कहा कि done प्रभु आपने मुझे तो ये सब on the सुविधा दी है banks of Ganga आपका ji. चरण आपका Oh, दर्शन Yamuna ji, परंतु but उसके nothing साथ साथ happens on आपकी Ganga अनुमति ji's है shore. आप So, मुझ में स्नान करते हो पान करते हो so one day कितना she सौभाग्य told मेरी सखी को मिल Krishna गया ji that मेरी give बहन को some मिल गया fortune to my मेरी friend मथुरा Ganga सौभाग्य ji मिल as गया well. तब यमुना की प्रार्थना से On the कृष्ण ने prayers of कहा कि Yamuna कोई ji, बात नहीं यमुना Krishna said that तुम no चाहती हो problem. तो If मेरी you सारी desire लीला यमुना तट पर that हुई my आने all वाले pastimes समय were में done मेरी in सारी Yamuna ji, भागवत कथा but गंगा के तट पर होगी all my Bhagavatam इसलिए kathas or कहते हैं pastimes in सुखदेव the जी ने future will भागवत कही be गंगा के discussed तट in पर Hari, सनकादिकों ने in भागवत कही गंगा on के the तट banks पर of Ganga ji. मैत्रेय विदुर So संवाद गंगा के Sankadik, तट पर सारे Maitre, Vidur भागवत Samvad, हजारों and कथाएं even Shukdev Goswami, they all sang the glories इतने of the सिद्धों की Bhagavatam on the गंगा banks of के Ganga तट ji. पर कथा होने लगी अब So जब कथा now होती है ना the वहां katha used to स्पिरिचुअल happen in लालसा और बढ़ जाती है अब गंगा के तट पर जब on the banks of भागवत Ganga ji. कथाएं होने लगी When the तो गंगा को Bhagavatam और started इच्छा on हुआ the कि यार shores अब of कथा Ganga से ji, अब ठीक नहीं है so अब तो Ganga मुझे ji चाहिए ही became चाहिए more desperate गंगा ने to फिर से यमुना have को कहा कि देखो the यमुना darshan कथा से तुष्टि नहीं of मिलती है the Lord. मुझे So she प्रभु said का that, दर्शन चाहिए requested to Yamuna ji जब that I ये सब want सुनकर to गंगा का वेग see बढ़ा तो 550 वर्ष the पूर्व Lord as भगवान well. कृष्ण So when चैतन्य महाप्रभु के the रूप में जब Ganga's प्रकट हुए force तो गंगा के increased तट पर प्रकट हुए 550 नंदी years महापुर धाम back, जानवी Chaitanya तीर्थ धरे Mahaprabhu जग मन लोभा took इस birth प्रकार on the से banks of Ganga ji जानवी as संगिनी Chaitanya Mahaprabhu. यमुना जी के विषय में कहते हैं फिर आगे कहते हैं सिंधु सुते पहली लाइन के अंत And में then the last word of the first कैसे है line, चलिए she's उसको mentioned as कहते हैं Sindhu सिंधु Sute. सुते अब आपने तो सीधा सुन लिया और एक्सेप्ट भी कर लिया होगा लेकिन कैसे करोगे क्या यमुना So you सिंधु might का have सुता just है accepted that. सिंधु माने समुद्र सुता माने कन्या क्या यमुना समुद्र की कन्या है तो फिर ये गड़बड़ कर दी शिव जी ने So Shivji has मिसअंडरस्टैंडिंग probably गड़बड़ है
made a mistake, or is it some problem in our understanding? So that is the mellow of understanding the acharyas in detail. So here he says Yamuna ji as Sindhu Sute, although she is a daughter of sun, but ultimately her water comes from the sea. So what is the source of the water of the rivers? So these rivers come from the mountains. So from where does the water comes from the mountains? From where does the mountains get this water? They get it through the rains. So they get the water from rains. And how does the water comes? The water comes from the clouds, and the clouds get that water from where? From sea. And it doesn't just comes ex- easily. So all the water from the sea by the heat of sun gets evaporated and it accumulates in the clouds, and then it comes to the mountain and it flows as a river. That is why he mentions that Sindhu Sute. So in the second line he says, गोकुल भीति विनाश कृते मधु रिपु भूषणी। यमुना कैसी है? मधु। how is Yamuna ji? Madhu means the demon Madhu. Ripu means enemy. So who was the enemy of the demon Madhu? Was Krishna, because he killed Madhu demon. And to such Krishna, she is a ornament. So he is the ornament of Lord Shri Krishna. When Yamuna ji stands in front of Krishna, I like this really beautiful whatever Govind TV has created. So Yamuna ji and Krishna ji. So let me say something about this backdrop. So there are quite a few pastimes in the. After seeing this image, I remember that this form of Yamunaji is divine and transcendental. We might get confused whether it's Krishna or Yamuna. So we will discuss this further later. So Yamunaji has a garland of lotus flowers. कमल के पुष्प की माला। अब ये कमल के पुष्प की माला के दो भाव है। So this lotus garland has two moods or mellows. Because she is the fourth wife of Krishna, so it is natural that she gives garland to Krishna. But the second one is a serious mellow. Yamuna ji has this lotus garland. So these are not the lotus, they're all the devotees who have taken the shelter of Yamuna Maharani. So all those who have taken shelter of Yamuna ji, she binds all these devotees in the garland form, and then she
offers this garland to Krishna. So, on our own endeavor, we cannot achieve Krishna. But if we take the shelter of Yamuna Maharani, then she will offer us to the Lord. That is her power, magnificence. And this philosophy is proved by Shankaracharya in this Ashtakam. In the second line, he says that she is the ornament of Lord Shri Krishna. And then he further adds, so she is the one who satisfies the Lord of Goddess of Fortune, Lakshmi ji. So Krishna fulfills our desires, but Yamuna ji fulfills the desires of Lord Shri Krishna. So Gokul, that means in Braj Vrindavan, in Gokul, Bhiti means fear. She destroys all kinds of fears in Gokul or Vrindavan. So how does she destroy them? We will listen through the medium of Bhagvatam. But Shankaracharya is saying in some other sense. So one Gokul is the one that is of Braj Vrindavan, and the other is our sense organs, also are called Go, and Kul means collection. So the fear of the collection of our senses is destroyed by Yamunaji. So we are fearful of all our senses. We all get scared that we might get specs, etc. So, and in the spiritual world, what is the fear? That even if we are in the devotional service, yet we are aware that we should not do sense gratification, but still sometimes we get attracted to them. So that is the fear. But if we take the shelter of Yamuna Maharani, then we will become fearless of the collection of our uncontrolled senses. And he further adds, मानस दायिनी केशव केलिनी दान गते जगदग मोचनी मानस दायिनी केशव केलिनी दान गते। आगे कहते हैं, so he adds further, Jagad Agmochini. So if we bifurcate this word, Jagat in word, so Mochini means destroy. So she destroys all the sins of this material world. And the next word is Manas Daini. So she provides our heart's desires. So she is the one who fulfills our desires. And we are in material world, and we are in the household fold of life. So we all have material and spiritual desire. So some have desire that we should go to Braj Vrindavan and stay there.
and take the shelter of Yamuna Maharani. So this is also a desire. It might be a spiritual desire, but the one who fulfills all our desires is Yamuna Maharani. That is why it's mentioned Manas Daini, who provides our heart-filled desires. फिर आगे कहते हैं केशव केली निदान गते केशव So माने भगवान श्री Keshav कृष्ण means Lord केशव Krishna. केशव क्यों कहते हैं So why is he called Keshav? एक तो केशी नाम के असुर का वध किया Because he केश killed माने the केशी demon व माने वध Keshi, कर देना केशी नाम and के Va असुर का वध किए इसलिए means केशव what कहते to हैं kill. So that is why he is called केशव Keshav का दूसरा first. अर्थ है क माने But the ब्रह्म second meaning is Ka अब means तो क Brahma. माने ब्रह्मा कैसे वर्णमाला का प्रथम अक्षर कौन सा है वर्णमाला जानते ना So क ख ग घ you च will छ say छ ज that ट ठ ड how ढ Ka ओ can प प ब म हाँ? denote तो वर्णमाला Brahma. का कक्को So, बाराखड़ी का पहला अक्षर क्या है क so in the Varnmala, the first alphabet ये is कौन सा है Ka, ब्रह्मा and the माने first ब्रह्मा को Jeev क कहते हैं or living इन entity दोनों को is समाना Brahma. So that is तो why he's केशव called Ka माने क का अर्थ है or केश denotes Brahma. और ईश माने शिव और व And माने Ish वश में means रखने वाला Shiv, ब्रह्मा और and Va शिव को means अपने वश में Vash रखते हैं or इसलिए control. कृष्ण को So a केशव कहते person हैं तब आपको who बोलोगे controls मैंने तो Brahma and देखा Shiv उनके is called भयभीत के मारे Keshav. भयभीत होकर So, गला पकड़कर कंट्रोल करते हैं so नहीं does he हरि control them भक्त by दास fear? दुई मुख But तम सर्व मंगल हरे प्रेम दिया हरे मन मैनेजमेंट सीखना है ना तो इससे सीखिए कई so बार we should learn management from भागवत गीता Krishna. क्लास कीजिए He मैं मैनेजमेंट कुछ नहीं controls करता through love. भागवत कथा में सब मैनेजमेंट आ ही जाता है So in Bhagavatam, there भगवान is श्री कृष्ण all ब्रह्मा और शिव को everything about management as well. जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करते So he doesn't controls them by कंट्रोल नहीं करते force, इतना प्रेम देते हैं but he शिव gives से so कभी much love and दूर होके affection वो दोनों that by कृष्ण की that नजर से दूर नहीं होते प्रेम they दिया get हरे मन controlled by प्रेम देकर शिव और Krishna. ब्रह्मा के मन को हर लेते हैं So by giving love, इसलिए कृष्ण को केशव कहते हैं undevoted कैसे love, केशव he wins the केली heart केली and माने लीला controls केशव Brahma and केली Shiv. निदान गते So तीसरे लाइन का Keshav अंतिम Keli शब्द Nidan Gate. खोजते रह जाओ ढूंढते रह जाओगे So, हैं? तो तीसरी so लाइन the में last word in the third स्वरूप दिखाना line. टांग कर बैठना और फिर उसमें शब्द ऐसे ऐसे आपको मारना कि तीसरी लाइन का अंतिम हाँ? फिर भी आपको समझ में न आए So if तो we आपका then दुर्भाग्य also आपका you दुर्भाग्य don't understand, then it's your misfortune, I would say. तो केशव केली निदान गते केशव भगवान श्री कृष्ण So केली माने Keshav लीला is Lord केशव Krishna की and लीला Keli का means his निदान pastimes. आश्रय गते माने स्थान कृष्ण की So, लीला का आश्रय स्थान है so माया Nidan means shelter माने and कृष्ण Gate लीला means the का place. प्लेटफॉर्म है So the कृष्ण platform लीला की for पृष्ठभूमि the है pastimes of मानव Lord नहीं Shri Krishna is राधा Yamuna होती Maharani. तो If there मुझे was no लगता नहीं कि Yamuna, कृष्ण लीला कर then पाते there won't have यमुना been के any ऊपर pastime of the भगवान श्री Lord. कृष्ण और भक्तों हम राधा माधव रोज गाते हैं And we sing मैंने Radha Madhav प्रारंभ ही यहीं से किया daily. ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा व्यासपीठ पर बैठकर सबसे पहला So गीत कहते हैं ना we जय all राधा Gaudiya माधव Madhavas start with कुंज Jai बिहारी Radha Madhav Kunj और Bihari. गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी और फिर अंत में यमुना तीर वनचारी So we यमुना say के Yamuna किनारे Tire विचरण Vanchari, करने वाले हैं the one who भगवान श्री कृष्ण roams फिर on the बताया shores of Yamuna Maharani. भगवान श्री कृष्ण की लीला का आश्रय स्थान है फिर आगे So बोलते हैं जय यमुने जय he भीति says, निवारिणी यमुना महारानी की जय हो इसका तो मैंने he आपको says, बता दिया कि दो बार जय जयकार करते हैं he mentions यमुना all महारानी की praises to जय Yamuna भगवान Maharani की twice, as explained earlier. भीति निवारिणी सभी प्रकार की भीति So भय Bhiti Nivarini means का निवारण one who destroys all types of fears. और फिर संकट नाशिनी Then Sankat जीवन Nashini. देखो हम सब गृहस्थ मनुष्य जीवन So है we are all और मनुष्य जीवन में householders अनेकों प्रकार के संकट होते ही हैं in the human form, होते ही हैं and there are quite a few एक types of बार disturbance or
obstacles in our human life. So one time people complain to the Lord that we are we are getting all types of problem. So please do something. So he called them all to his abode. And he said, if you think that you're getting all the trouble, then why don't you exchange it with your neighbor? So that's how that at least we are aware of our problems, but we don't know about the problems of others. So the problem may be different, but everybody is facing some difficulty. So there are some dharam sankat or pran sankat, then rashtra sankat, the Kautumbik sankat. So these become so much entangled that it becomes highly difficult to resolve them. See how the COVID entangled everyone and anybody couldn't solve it. Sometimes the whole nation is in distress. Sometimes we are in fear of our life. But all these types of fears can be removed by taking the shelter of Yamuna Maharani. And the end he says, Pavaya Mam. So this is how Shankaracharya ji sings the glories of Yamuna Maharani in one verse. So there are 16 such verses, and there are numerous examples, and it can be expanded to such a huge height. You might all be aware. So I'm just giving a brief introduction. So in the past, we have heard about the birth or manifestation of Yamuna Maharani, that she came from Kalind mountains top. And on which day did she manifest it? So Krishna manifested on a Janmashtami. So what was the date when Yamuna ji manifested? So it was on Chaitra Mas Shukla Paksh and the 6th day of the lunar month. And she manifested on this earth. And she entered Mathura. And that is why in Braj it's still celebrated, and it's mentioned as Yamuna Shashti. And on this day, Yamuna Maharani is given veneration, and there is a great festivity and celebration, and beautiful clothes are offered to her. So Yamuna ji is twice born, so she is called with two names, that is Surya Nandini or Bhanu Nandini, that is the daughter of sun. So there are 1000 names of Yamuna Maharani. लेकिन मैं अमित नारायण प्रभु को दे दूंगा, कथा के पहले 5-10-15 मिनट वो आपको दिखा देंगे यमुना महारानी के 1000 नाम. So there are 1000 names of Yamuna Maharani, and they are all depending or manifested according to her nature and her pastimes. So Amit Narayan Prabhu will share the 1000 names. I am giving you the other two extra names for the Surya Nandini, Bhanu Nandini, that is the daughter of sun, because she manifested from the sun,
And the second name is Kalinda Nandini. That is the daughter of the mountain Kalind. कलिंद नंदिनी. So पृथ्वी लोक पर यमुना कलिंद पर्वत से आई. As she manifested in the earth from Kalind mountain. And what is the meaning of Kalind? Let's understand that. So कलिंद नंदिनी कहते हैं. आचार्यों ने कलिंद का So अर्थ Acharya says, कलिंद में दो शब्द है. so Kalind is made from two words. तो ये संस्कृत कलिंद शब्द की व्याख्या डेफिनेशन है. So this is the definition of Kalind. और द. So Kalind or the. कलिंद शब्द में कली शब्द जो है कली का अर्थ है कलयुग. So the Kali means Kali Yug or quarrel and hypocrisy, disturbance. ठीक है, ये सब कली के अर्थ है. कलिंद शब्द का अर्थ कली और द. So this is the meaning of Kali. तो कलिम माने कलयुग क्लेश झगड़ा. Kali Yug or quarrel. दयति. दयति का अर्थ क्या कहा? Dayati means Khandayati. That is. युग है, क्लेश है, So, झगड़ा है, प्रॉब्लम है. all the quarrel and problems of Kali Yuga which are destroyed is destroyed by Kalind. That is why she's called as Kalind. So let's discuss it further. So what is the vehicle for Lord Vaishnav? This is Garur, eagle, and for Shivji it's bull, Nandi, and for Ganeshi it's a mouse, Mushak, and for Gangaji, so it's crocodile. Then we will have a question. Then who is the carrier or vehicle of Yamuna Maharani? तो यमुना महारानी का वाहन कौन सा है? माँ गंगा का वाहन है मगर, क्रोकोडाइल, ग्राह. So for Gangaji the vehicle is crocodile, but for Yamunaji it's tortoise, kachua or kurm. So the Acharyas interpreted, she didn't made vehicle a fish or crocodile, but she kept tortoise to teach us that we all living entities should, if we want to manifest the Lord's prem, Krishna prema, then we should be like a tortoise. So it's not that we have to become tortoise, but we have to learn its nature. So the tortoise can expand or limit his senses whenever he desires. So we are not able to control our senses. So Yamuna ji here wants to teach us that if you want to have Krishna prem or love towards the Lord, then we should have control on our senses. So Ramji was equally happy when he was to be anointed king or has to leave for exile. So Arjuna asked the question from Krishna in Bhagvat Gita. He says,
अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किमासीत व्रजेत किम। भगवद गीता में, So in Bhagvat Gita, Arjun asked 25 questions in broader sense. And in 25 questions, this is one of my favorite questions. So it used to be my question as well. So he asks, oh Keshav, so Sthit Pragya, the one whose mind is constant and fixed. Whose mind is fixed. A person whose mind is stable, or a person who is devotee or a gentleman. What is his language? How does he speak? So when I was small, I had this question that who should be our role model? How he speaks. So this is a question of Arjun in Gita. So this is from the second chapter, 54 verse. And how does he chant? We have a great fortune. In 2022, we have started this, that we chant 2 hours in Mangla Aarti together. I'm daily there, and I feel ecstatic after seeing you all. And you all are welcome whenever you get an opportunity. Please join. And we all sit for 2 hours and do japa. So at least you come to see that the one whose mind is controlled, how does he chant the holy names? How he speaks? And how does he walks? So the way a sage walks is also very magnificent. And how does he sit? So this is the question of Arjun. And please, Krishna, let us know. And Krishna answers in 5-7 verses. So here the question Kim Asit, that is how they sit. How a devotee sits or does his work. So Krishna answers this by discussing about the tortoise, and the tortoise is connected to Yamuna Maharani. Says that like a tortoise, when he wants to work, he just stretches his legs and hands, and once the work is done, he squeeze all his senses. So we should not
unnecessarily waste our senses. And we should use our senses as much as we require, and then we should shut them or control them. So this is what Yamuna Maharani is trying to teach us, that our senses should be internalized. That is, they should be leaning towards the Lord. But if they gravitate towards the material desires of world, then we will get offenses. So we should have the control on our senses like a tortoise. So if we see Facebook or news, but it should be in a controlled manner. When we start, we don't stop until the battery of the phone dies. So if we want that Yamuna Maharani make us our carrier, or we get Bhagavad Prem, then we should become like a tortoise, the carrier of Yamuna Maharani. This is how we are listening to the glories of Yamuna Maharani. So let's take a small break and we'll proceed further. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का कि आज श्रील शंकराचार्य कृत जो यमुनाष्टकम हमने श्रवण किया। सर्वप्रथम तो उसकी इतनी अद्भुत व्याख्या आज श्रवण की, इतना रसप्रद था आज की कथा। हम देख रहे हैं कि लोगों के मुख में ये जो प्रसन्नता के चिन्ह हैं वो प्रस्तुत हो रहे हैं। तो बहुत ही अद्भुत आज की कथा, और किस प्रकार भगवान शिव, जो शुरुआत हमारी प्रभु जी ने कथा में की कि किस प्रकार भगवान शिव हैं जो माँ गंगा को भी धारण करते हैं, परंतु यमुना महारानी को वे अपने में हृदय में रखते हैं। तो साथ ही साथ बहुत ही सुंदर हमने उस यमुनाष्टकम के द्वारा जो श्लोक गान किया, उनका प्रथम श्लोक और उनकी इतनी अद्भुत व्याख्या, शुरुआत जो मधुवन चारिणी, और मधुवन में जो रामायण में प्रभु जी लेके गए मधुवन से, एंड देन किस प्रकार श्रील नारद मुनि तथा हनुमान जी का उस संवाद से प्रस्तुत किया कि जो व्यक्ति भगवत नाम नहीं ग्रहण करता या भगवत नाम नहीं लेता है वह प्राय मृत के समान है। और यहाँ पर भी भगवत नाम की महिमा को प्रकाशित किया श्री हनुमान जी महाराज ने, और इतनी अद्भुत कथा श्रवण कराई किस प्रकार ये जो मधुवन है जो रामायण में भी प्रस्तुत होता है, और इसके संसर्ग में प्रभु जी ने इतनी अद्भुत कथा को श्रवण कराया। तो थैंक यू प्रभु जी। साथ ही साथ नैनवन भास्कर वाहिनी और सिंधु सुते, तो कुल मिलाकर आज एक एक शब्द पर जो व्याख्या आस्वादन करने मिली है बड़ी ही रसप्रद थी और मनमोहक थी आज की इस कथा के अंतर्गत। और यमुना महारानी के जो नाम है 1000, वन ऑफ देम, 2 of them you revealed, और उसके ऊपर जो व्याख्या, साथ ही साथ किस प्रकार वी आर गेटिंग कैरिड अवे दैट यमुना महारानी का जो वाहन है उनसे जो सीख आपने अभी अभी जो श्रवण कराई, कैसे यमुना महारानी है उनका वाहन है कुर्म, और कुर्म के जीवन से या कुर्म उनको क्यों ग्रहण करती है, बिकॉज सी इज कंट्रोल। अगर कुर्म है उनकी इंद्रिय हमेशा कंट्रोल में होती है। सो थैंक यू वेरी मच फूजी फॉर दिस वंडरफुल एक्सप्लेनेशन थ्रू आउट दिस भागवत कथा में जो हम श्रवण कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे प्रभु जी ने बताया कि स्थित प्रज्ञ का भाषसी, हम इस अर्जुन के प्रश्न के अंतर्गत प्रभु जी ने बताया कि जो साधु होता है उनके लक्षण बताए, पूछे अर्जुन ने भगवान को पूछ रहे थे कि जो साधु होता है वो किस प्रकार चलता है, किस प्रकार बोलता है, उनका आचरण कैसा होता है। तो
वो हरिनाम जप कैसे करता है. So as we all know that प्रभु जी ने भी रिवील किया कि in year 2022 we have taken a vow, I mean vow, okay, we have taken a resolution that we will, as long as this crisis are there, we'll keep on meeting in this wonderful platform, and together we will do Harinam Japa, and together we'll perform all the artis and all. So though we are at our own place, हम अपने अपने घर पे हैं, परंतु साथ ही साथ ये जो प्लेटफॉर्म है इतना अद्भुत है. यहाँ पर इतनी रसप्रद प्रभु जी मनमोहक कथा को श्रवण कराते हैं, और जो भक्ति में हमें जो आवश्यक चीज है, जो भक्ति का पोषण करना, ये जो बीज है भक्ति रूपी बीज, उसको सिंचन करना प्रतिदिन, उनको भागवत रूपी पानी से उसका सिंचन करना, या भक्ति रूपी पानी से हम कह सकते हैं. तो इस प्लेटफॉर्म पर माध्यम से हम सब हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, और जैसे प्रभु जी ने बताया कि हमें प्रतिदिन यहाँ पर हमने ये जो रेजोल्यूशन लिया है, तो आप सब भी इसमें आमंत्रित हैं. प्राय बहुत सारे भक्त हमारे साथ में जुड़ी रहे हैं, बट यू ऑल आर ऑल्सो वेलकम जो इस सूचना को शायद नहीं जानते हैं. तो फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी वुड लाइक टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन सो दैट आप भी हमारे साथ में मॉर्निंग को हरिनाम जपा में जुड़ सकें. तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था है जो गोविंद टीवी की इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अमृत चर्चा के प्लेटफॉर्म पर हम ये कर रहे हैं. तो एवरी सिंगल डे वी आर गोइंग टू मीट हियर इन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म, और मॉर्निंग में भारत के समय के अनुसार यहाँ पर इस कार्यक्रम को किया जाता है, इस हरिनाम जपा को किया जाता है, फॉलोड बाय दर्शन एंड ऑल. तो 5:30 से लेकर 7:30 AM तक भारत के समय के अनुसार हम सब यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर हरिनाम जप करते हैं, एंड देन डू सम कीर्तन एंड ऑल. तो यदि आप भी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो काइंडली फॉलो द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इफ यू आर लोकेटेड इन USA समवेयर, एंड यू कैन फॉलो अस बाय एट दिस टाइम एट प्रेजेंटली, जो कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार है. तो यही प्लेटफॉर्म है, और यही पासवर्ड, यही यूजर आईडी, यही पासवर्ड है 876109593032. आप जूम के माध्यम से हमारे साथ में जुड़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और 1008 इसका पासवर्ड रहेगा. तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी हमारे साथ में इस नए साल में एक नया रेजोल्यूशन लेकर, और ये इसके साथ में कि हम भी भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं. सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि भाव तो हर एक व्यक्ति के अंदर में होता है ना, थोड़ा बहुत कम ज्यादा मात्रा में, परंतु भगवान कमिटमेंट भी देखते हैं, हमारी एक्शन से भी, हमारी एक्शन भी देखते हैं. तो हमारा एक्शन भी प्लीजिंग होने चाहिए भगवान को. सो वी वेलकम यू दैट यू विल कम एंड जॉइन अस इन दिस हरिनाम सेशन एज वेल. सो लेट अस ऑल नाउ वेलकम प्रभु जी अगेन टू लीड द प्रोसीडिंग. हरे कृष्णा. प्रभु जी माइक ऑन कीजिए. यस. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कलिंद गिरिमस्तके पतद मंद पुरोज्वला, विलास गमनोल्लस प्रकट गंड शैलोन्नता, सघोष गति दंतुरा, समधिरूढ़ दोलोत्तमा, मुकुंद रतिवर्धिनी, जयति पद्मबंधो सुता.
कल ये थोड़ा सा बाकी रह गया था. So yesterday we were not able to complete this, so let's complete this. So गत सत्र में हम सुन रहे थे कलिंद गिरी Oh, मस्तके. we were listening कलिंद yesterday. पर्वत के that मस्तक से The पतत one who यमुना महारानी starts from or falls from the और forehead कलिंद of गिरी Kalind मस्तके mountain, पतद अमंद. मंद माने ढीले ढीले, अमंद माने and अत्यंत तेज. and it और flows with quite उज्ज्वला, force, पूर्व माने प्रवाह से उज्ज्वला. यमुना महारानी कैसी लगती हैं? उज्ज्वल. उज्ज्वल माने and she उज्ज्वल सफेद. appears bright, यहाँ तो लड़का हो fair. गया. यमुना सफेद है, So लेकिन there आचार्य is a जी ने contradiction दिया उज्ज्वल. because उज्ज्वल का अर्थ है ना उज्ज्वल. is she fair? So Ujjwal means तो white यमुना महारानी को or यहाँ पर fair. कहते हैं जब कलिंद गिरी मस्तक से वो गिरती So है so तो when यमुना she महारानी starts का from वेग प्रवाह प्रचंड होता Kalind, है. so the और force वो is प्रचंड quite प्रवाह कैसा लगता है? उज्ज्वल. अब forceful. आस्वादनीय सब्जेक्ट ये है And कि यूं तो यमुना महारानी श्याम वर्णा है, although वर्णी है. कृष्ण की सभी Yamuna पत्नियां Maharani श्याम, is the only one who is dark complexioned, यमुना तीनों श्याम वर्ण के हैं. all the siblings are श्याम है, लेकिन यहाँ पर उज्ज्वल क्यों कहा गया? तब आचार्यों ने इसका dark विचार complexioned. किया So why she is mentioned as fair here? क्योंकि बहुत ऊपर से जब गिरती है So तब it यमुना के ऊपर फैन हो जाते हैं. when she starts from the height, then नाइग्रा फॉल्स there अमेरिका वालों ने देखा ही होगा. वो भी इतना ऊपर से नहीं गिरता है, लेकिन फोर्स है there is इसलिए a जब foam वो गिरता है because of the तो इतना force फोर्स होता है कि वो of the सफेद because of the सफेद force फैन जैसा हो जाता है. it appears तो as यमुना महारानी white यूं तो foam. श्याम वर्णा है, लेकिन Although कलिंद she गिरी is dark मस्तक से गिरती complexioned, है तो but उनका as she फैन होने के कारण falls धवल from वो उज्जवल वो Kalindi सफेद दिखती है. mountain, she appears fair तो or इसलिए कहते white हैं कलिंद गिरी because of the मस्तके foam, पतत गिरते हुए अमंद अत्यंत पूर्व प्रवाहों से वह उज्जवल हो because she जाती है. is मन शोभायमान. coming with so much force that she यहाँ becomes पे एक fair आस्वादन कराऊं आपको. and looks beautiful. कलिंद गिरी मस्तके से एक पॉइंट ये हमें आस्वादन करना है So कि with यमुना Kalindgiri बिल्कुल Mastak, भगवान श्री कृष्ण से पैरेलल चल रही है. that she is बिल्कुल walking कृष्ण से पैरेलल. parallelly क्योंकि यमुना जी to का दिमाग Lord में Krishna शादी करनी है कृष्ण से. मतलब because जैसा कृष्ण her वैसी यमुना. mind is completely engrossed in marrying Krishna. कृष्ण का प्रथम जन्म So the first वसुदेव और manifestation of देवकी के सामने Krishna हुआ. was कृष्ण in का front जन्म of Devaki and Vasudev, के समक्ष हुआ, उनके सामने प्रकट हुए. और फिर उनका वहां से दूसरा जन्म गोकुल में हुआ, and नंद the बाबा. second birth was जन्म हुआ in Gokul वसुदेव के सामने, लेकिन वहां at the रुके home नहीं. of Nand फिर Baba वृंदावन and गए, गोकुल Yashodamai, गए और ब्रजवासियों के साथ उन्होंने लीला प्रकट की. and he started doing यमुना his महारानी का भी pastimes कुछ ऐसा in ही Vrindavan. कला. Similarly, Yamuna इनका Maharani जन्म सूर्य और took संज्ञा की कन्या के रूप में हुआ, birth as the लेकिन वहां daughter रुकी of नहीं. Sun and बल्कि विंध्य Sangya, पर्वत but से she didn't सीधे stay ब्रज there. मथुरा में आ She गई moved और from मथुरा वासियों Kalind के साथ mountain ब्रजवासियों के साथ and यमुना ने लीला की. came to Vrindavan तो कलिंदगिरी मस्तके से and आचार्य started her pastimes there. आचार्य हमें ये स्मरण कराना चाहते So हैं. that is what फिर दूसरी लाइन में कहते हैं Shankaracharya is trying to tell us. विलास In the second line, what he says, उल्लसत. यमुना महारानी विलास से, विलास माने लीला पूर्वक, गमन माने यमुना महारानी का गमन कैसा है? so टेढ़ा है. how मैंने पहले does भी कहा, Yamuna Maharani जैसे walks? कृष्ण टेढ़े हैं वैसे यमुना So भी as टेढ़ी. गंगा बहुत Krishna सीधी है. is curvy, गंगा का प्रवाह similarly भले Yamuna फोर्सफुली होगा, is लेकिन फिर भी गंगा, also माँ गंगा सीधी walks चलती है, सीधी चलती है. यमुना का in जो टेढ़ापन है, different directions. वैसे नदी में भी Yamuna टेढ़ापन है, Maharani गंगा में भी बड़ा टेढ़ापन है. is very forceful, तो but विलास से she गमन walks उल्लसत, straight. विलास पूर्वक टेढ़ी मेढ़ी चाल से यमुना So, और सुशोभित होती है. so because she walks प्रकट गंड शैल उत्पन्ना. like that, वो that is देखते why हैं she पर्वत, appears और very पर्वत beautiful. फ्लैट नहीं होता ना, उबड़ खाबड़ होता है, ऊंचा नीचे होता है.
So in the mountains, sometimes she goes up and sometimes it goes down as according to the direction or the slope she's moving. And because of that disparity in the mountain, and it appears that she is walking barefoot to reach or meet her Lord. She is walking barefoot to meet Shyam Sundar, her Lord. फिर आगे कहती हैं कि कलिंदगिरी पर्वत से जब ब्रज में जा रही है So when she walks from आ रही है चुपचाप बैठे बैठे मुंह चढ़ाते हुए Kalind, हुए she's walking. मारते हुए किसी को पूजा में बैठने नहीं देते हुए ऐसा नहीं जाती यमुना कैसे जाती है तो कहते हैं सघोष गति दंतुरा समधि रूढ़ दोलोत्मता सघोष गति दंतुरा समधि रूढ़ दोलोत्मता सघोष. So she doesn't go silently. She makes sound while walking. So if we see in the material eyes, then we will feel that her voice is khal, khal. But she is making sounds. So she is chanting the name of her Lord while she is moving to meet him. And she is remembering her Lord Vallabha Vithala. And she is dancing and chanting and moving towards the Lord. And when she walks, she is swinging. Samadhi means, Dulottama means a swing. So she's walking as if she's on a swing. In the last, it says Mukundrati Vardhini. So Jayati, Jai Jaikar means the glories should be sung off. So we need to understand this one, Padma Bandhu Sutta. So who should be glorified? So Padma means lotus, Bandhu means friend. So who is the friend of lotus? She is the daughter of that person. And though that should be glorified. So she is the daughter of sun Bhaskar. So how can there be friendship between a lotus and sun? So it is a poetic creation of Vallabhacharya. So here Surya is mentioned as Padma Bandhu or friend of lotus because the lotus flowers or opens itself only when there is the rays of sunlight, even if it is in a very clean water, but it cannot flourish unless it gets the sunlight. That is why Surya is or sun is called as the friend of lotus, and she is the daughter of sun. So such Yamuna ji should be glorified.
So what is the most सबसे महत्वपूर्ण important reason? मैन ऑफ द मैच आज का पॉइंट है मुकुंद रति वर्धिनी। So that is why, because she should be glorified, because बड़ा पॉइंट है भक्तों। she is Mukund Rati Vardhini. It is the most important point, because by the mercy of Yamuna Maharani, we will get, the Krishna will मूल बात तो यह है कि कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं, तो कृष्ण get हमसे कब प्रेम or करेंगे will get attracted to us. की कृपा हो जाए। So when we have her shelter or her mercy, only then we will be able to get Bhagvat or Krishna Prem. Ganga ji can give liberation, but Yamuna ji provides bhakti or pure devotional service towards the Lord. And there is an example in the life of Bharat in Ramayan. The biggest character in Bharat in Ramayan is Bharat. He was the one who was the most surrendered to Lord Sri Ram. और भरत का ये समर्पण, भरत का ये प्रेम And his surrender, from where did it manifested? It manifested by the mercy of सुनते हैं लेकिन ये सब फोकस नहीं Yamuna Maharani. We listen to Ramayana, but we don't focus. छोटी बातें छूट जाती So these small things we miss. But right now that we are discussing the glories of Yamuna Maharani, so let me share that point from Ramayana. So from Ayodhya Aranyakan, how in Ayodhya, महारानी की कृपा हुई और Bharatji got the mercy of Yamuna Maharani, भरत जी के हृदय में and जी के प्रति प्रीति he got बिल्कुल the love towards the Lord. प्रसंग कुछ इस प्रकार का है, आप सब जानते हैं, मैं केवल स्मरण करा दूं। So let me remind you the pastime. कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया। On one hand, Kekai forced an exile on Ram Chandra, and Ramji went smiling with his wife and brother Lakshman into the forest, and on the other hand, Dashrathji sent Suman that you go with Ram and just roam around for 4-5 days and bring him back. Sumanji went गंगा के तट से श्रृंगेरपुर से with, सुमंत्र जी को वापस भेज दिया। जाना and Ramji sent Sumantra back कुल परंपरा को याद करके by वापस भेज दिया। explaining about their lineage and its magnificence. सुमंत्र से कहते सुमंत्र बताओ क्या हुआ? And Dashrathji asked, what happened? Has Ram came back? So he says that he was telling the whole story that we stayed there and we did it. And finally, he tied his hair and he forced me to go back. So he said that. So he asked Sumantra, will Ram come back or not? Sumantraji said, he will come only after 14 years have passed. And Dashrathji says to his minister Sumantra, he used to say that I am very lucky that you are very fortunate, but I am the most unfortunate of the beings. He says, પ્રગટ્યા મારા પાપ આજે બધા પ્રગટ્યા મારા પાપ ગુરુ દુભાવ્યા હશે ગાયોને મારી હશે ગુરુ દુભાવ્યા હશે ગાયોને મારી હશે મારા હશે માને બાપ
ડુંગરડે મેં ધામ લગાડ્યો એણે મારો ખેલ બગાડ્યો ડુંગરડે મેં ધામ લગાડ્યો એણે મારો ખેલ બગાડ્યો सुमंत्र सुमंत्र तू कहता था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं सच कहूं तो मैं मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं मैंने पूर्व जन्म में Mantra, there is nobody unfortunate like me. Maybe I have killed cows, or maybe I have hurt my guru, or maybe I have hurt my parents. That is why I'm suffering today, that my son Ram has left me. राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरी राऊ गए सुरधाम राम 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 बोलते बोलते And saying the name of Ram, he left his body. दशरथ के चार चार पुत्र So Dashrath ji had 4 sons, but when Dashrath ji died, none of his son was there. So Vashisht ji preserved his body in oil, and they called Bharat Maharaj, who has went to his grandfather's home. So he went to Kekai and she said that there is nothing to worry. The problem was huge, but by the help of mantra, she helped me a lot and everything got sorted out. Bharatji said that what kind of problem was there that you had to take help of mantra? So she said that there was a plot that Ram was to be anointed the king, and I sent him for exile for 14 years and I've made you king. And in that, there was some small problem that your father left his body. But after a few days, everything will become normal. So Bharatji became so angry and upset. He said that the mother who has given exile to Lord Ram cannot be my mother. How can you send Ram, the Lord of the universe, in exile? And then Kekai says that, oh my son, the son who doesn't considers her mother, he will go to hell. So Bharatji says that I can go to hell 100 times, but I will not call you my mother. So since now on, you're not my mother anymore, and I'm not your son. And Tulsidas ji writes a beautiful bhajan. बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज वनित ही भयो मुद मंगलकारी भरत जी ने अपनी मां को महतारी त्याग दिया दशरथ जी का दाह संस्कार हुआ और वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत अब पिताजी का राज्य तुम संभालो So Dashrath ji, his last rites were performed and Bharat ji disowned his mother, and there was a discussion that they were telling Bharat ji to become the king or to take care of the kingdom. But Bharat ji said that are you going to teach me philosophy and you're telling me that I am breaking the law? You have misread or he said that my mother first wish was what? The first wish was that Bharat should be the king, and the second was that Ram should be sent to exile. So the first benediction was that
Bharat should be the king and Ram should be sent in exile for the second. So you should have first made Bharat the king and then you should have sent me to exile. So, पहले मुझे राजा बनाया होता तो मैं भी देख लेता दुनिया so की कौन ताकत राम जी first को you should have भेजने made की me है king and then I would have seen that how who could have dared to send Ram into exile. और आप लोग हठ करके भी मुझे राजा बनाओगे And तो even ताकत if ना you persist, वही राज I will कराती not रहेगी be जब ये kingdom. रसा रसातल जाई ही The ना king, I will not be the king. मेरा भार ये धरती सहन नहीं कर पाएगी And ये the ब्रह्मांड मेरा भार सहन नहीं कर पाएगा earth, this material world, will not be मेरे able साथ to में चली जाएगी इसलिए मुझे बख्श दीजिए मैं तो जा रहा हूं मेरे भाई के पास tolerate my मेरे way, राम को लाने के and लिए I'm कृपा के going दिन हो to तो आप Ram भी मेरे साथ चलो to अयोध्या में bring him पहुंचा back. And if you all have heart, then you should also come along with me. चित्रकूट राम यात्रा में So Bharatji पहुंचा जुलूस लगभग पूरी अयोध्या walks तीनों towards Chitrakoot सब लोग with राम जी को वापस लाने के लिए all of Ayodhya Vasis, अयोध्या से चित्रकूट including जाने के लिए निकल the पड़े mothers. जब जा रहे थे So when they ऐसा were प्रसंग है going, there is कुछ a लोग आए pastime. हमारे आपके जैसे भाई भरत There was आप some. अच्छा कर रहे हो They said that you're हम doing a तो very नहीं good जा job. पाएंगे You're going to Lord Ram, हम नहीं आ पाएंगे but बोले we क्यों won't be able to बोले join बच्चों you की एग्जाम चल रही because है my kids हम have आपके साथ नहीं exams. आ पाएंगे So we won't be able घर to का ध्यान accompany you कौन रखेगा because we have to take care of the घर का ध्यान business कौन रखेगा and our भरत home. जी का बाटला फट गया है एक फटा हुआ और खरीदना Bharatji पड़ेगा lost control. भरत जी अरे भगवान से मिलने जा रहे हैं So that we are going to meet the भगवान से Lord. मिलने में तुम्हें ये घर संसार दुकान And ये संपत्ति ये सब at that चिंता time, करनी है you are worried अरे about ये the घर संसार material पुत्र परिजन संपत्ति क्यों होती obligations है ईश्वर and को मिलने के लिए relationships. He और says सब that यही घर परिवार all संपत्ति these things ईश्वर को are मिलने के लिए a बाध्य बनते vehicle or हैं a ईश्वर carrier लाकर to राखते हैं reach the Lord. But if आंखों में they काजल obstruct, लगाते हैं जय श्री माता आंखों में काजल of लगाते हैं आंखों if का we तेज बढ़ाने के लिए obstruct, then we लेकिन should जिस cut कारण off our से आंख relationship ही with Him. फूट जाए So if वो we काजल put और क्या coal काम in का our eyes to make our ये जो eyes घर beautiful, संसार ये but स्वजन ये if we संपत्ति become blind with ये such a भगवत coal, प्राप्ति के then लिए what is the use ताकि of यही लोग using that भगवत coal प्राप्ति में in our बाधक बने eyes? तो So ये क्या यूज है all these भरत जी facilities महाराज are राम there जी के for पास us to help खड़े us to realize God. But if they obstruct our भरत path, then जी what के is the लिए एक use of सुंदर them? पालकी और बड़ा रथ रखा गया लेकिन There was a भरत जी huge नंगे chariot पांव for पैदल Bharatji, चलते हुए but जा रहे he हैं नंगे walked पांव barefoot to meet Lord भरत जी Ram. की माताओं से क्योंकि भरत जी तो कभी चले नहीं है ना राजा Bharatji है has never walked भरत जी barefoot. के पाँव में He छाले is लगी a prince. धारा बहने लगी कंकड़ His पत्थर कांटे लगने लगे feet were bleeding सुमंत्र जी with the कहते हैं thorns बैठ and जा बैठ जा stones. They said, सैनिक कहते हैं बैठो Sumantraji, बोले and नहीं everybody रथ requested ऐसे that ही चल रहा है you should sit in the chariot, but तब he भरत जी doesn't कहते हैं sit. कि जिस मार्ग And पर he मेरा says बाप मेरा that ईश्वर on जिस this मार्ग path, पर नंगे पांव my चला हो Lord मैं घोड़े has पर walked बैठकर चलूं barefoot. How can जहां I पर मेरा ईश्वर नंगे पांव चला go है on a horse और in उस such a पर path? घोड़े पर I पालकी am में the बैठ कर servant of चलूंगा my Lord. How can I अरे sit in a दुर्भाग्य इस बात palanquin? का है कि My जहां पर misfortune प्रभु is का that चरण हो वहां मेरा मन where टिक होना चाहिए my father, लेकिन my मैं आज मेरा चरण Lord रखूंगा has कहाँ kept his feet, भरत I जी should कहते put my hand, but I am putting my feet हैं सिर भर on that path. नाऊं अचित असमोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा सेवक सुख चह मान भिखारी व्यसनि धन शुभ गति व्यभिचारी जिस मार्ग पर मुझे Bharatji मेरा says मस्तक that मेरा हृदय रखकर on चलना the चाहिए
path where I should have kept my heart, my head. I'm walking on that path. I'm the servant of the Lord. And whe- if I am a servitor of the Lord, then I cannot expect comfort, because if a servant expects comfort, it's not going to happen. As in, beggar can never earn respect. And if somebody is addicted, he can never have wealth, because he will burn the wealth in his addiction. Similarly, a servant cannot expect comfort in his life. So Bharatji is walking barefoot, and then he reaches Allahabad, Prayagraj, where Ganga and Yamuna ji meet. As there are the droplets on the lotus flower. Similarly, Bharatji has boils on his feet, and the blood is flowing from his feet. And everybody is distressed by seeing this condition of Bharatji. But when he saw Gangaji and Yamunaji overflowing, he became ecstatic, and he folded both his hands and says that history has it that nobody has begged in my Raghukul or my lineage, but today I will break that, because a person who is distressed can do anything. Today I am unhappy, and I'm going to break my vow or pride. मांगहूँ भीख त्यागी निज धर्मु आरत काहन करई कुकर्मु आरत काहन करई कुकर्मु। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, वो दुखी When somebody is distressed and his heart is filled with melancholy, so sometimes we have such that sometimes somebody in our family is in melancholy and they say something, then we should not take it to our heart. Then we should not hold it against them. And if we do that, then so this is what we have taken in management level. So people use it or take grudge against that, and they force him to go. But the people who are intelligent, they don't get it. So that is what Bharaji is trying to explain here. That a person who is filled with melancholy, so I'm going to break I'm going to do something that no one had in my lineage has done, and I'm going to beg, which nobody has done in my lineage. And he took the bath in the holy waters of Ganga and Yamuna ji in Allahabad, and he begs.
यमुना और सरस्वती क्रम से So, प्रकट। in front of Bharatji, Ganga ji, Yamuna ji, and Saraswati ji manifest one by one. ये चीज ये है। So this is the reference जब here माँ on your प्रकट हुई screen. पहले, फिर So यमुना the first प्रकट हुई, फिर Yamuna ji, सरस्वती प्रकट हुई। Ganga ji manifested, then दोनों भरत जी से Yamuna ji, पूछने and then लगी है, Saraswati ji क्या manifested, and चाहिए? then they all asked प्रसन्न है, him हमारे बस में to जो है ask any वो benediction. देने के लिए तैयार है। भरत तुम्हें क्या चाहिए? तो भरत जी ने मानो कहा कि भाई तुम्हारी कैपेसिटी क्या, तुम क्या? So Bharatji says that what तो you पहली are लाइन जो capable है to give. वो माँ So the गंगा के first मुख is से निकली है। Ganga ji says in माँ the गंगा first की line, ऑफर है और भरत जी उस ऑफर को ठुकरा रहे हैं। and Bharatji rejects that offer. What does he say? अरथन धर्मन काम रुचि गति न चहऊं निर्बाण जन्म जन्म रति राम पद यह बरदानन यान यह बरदानन यान। गंगा जी प्रथम लाइन में गंगा जी कहती है, So Ganga ji says in the first line, कैपेसिटी जो है मैं तुझे दे रही हूँ, then तुझे what अर्थ I can चाहिए, give अर्थ is माने पैसा। I can give you money, that is earth. क्या कहा? न So he says, no, I don't want wealth or money. अर्थ न, ये गंगा जी की ऑफर है। अर्थ So पैसा this is चाहिए, offered by Ganga ji. गंगा जी ने कहा धर्म चाहिए, Then she says that I can give you righteousness or dharam, मतलब तुम्हारे मन में जो कामना इच्छा and उसे पूर्ण करना। I can fulfill your desires. He says, no, I गति don't गति want माने that मुक्ति too. चाहिए, So निर्वाण Gati means liberation. निर्वाण मुक्ति चाहिए। भरत जी ने कहा न Bharat नहीं। refuses तो गंगा that जी ने as कहा well. बस मेरी So कैपेसिटी इतनी है। Ganga ji said that these are the things that I can offer you, but you're refusing मैं to take अर्थ any दे of them. सकती हूँ, So धर्म I दे cannot सकती give you हूँ, anything. काम दे सकती हूँ, I can just give रुचि गति any of निर्वाण these दे four सकती हूँ, things. और तुम्हें तो उसमें से कुछ नहीं चाहिए। गंगा जी आउट। अब यमुना यमुना So महिमा now क्या है? Yamuna यमुना जी ji कहती है says कि in the भरत second जी line, आपकी क्या कैपेसिटी, आप क्या दे सकती हो? तो यमुना जी ने कहा मैं तो एक ही चीज दे सकती हूँ। so दूसरी लाइन में Yamuna ji says, जन्म I can give you जन्म only रति one राम thing, पद, जन्म जन्मांतर that तक I can give you राम birth के after पद में birth, रति, मतलब love अपने of जीवन the में lotus feet मैं of क्या दे सकती Lord हूँ? Ram. भरत जी ने कहा That is यही what I चाहिए। can give you. And Bharatji says, देखो this is दोनों what I पक्ष, want. यमुना महारानी ने कहा कि जन्म जन्म रति राम पद, राम जी के चरणों में रति मति गति प्रेम, बोले हाँ ये चाहिए। तब तक सरस्वती आई। Then Saraswati ji सरस्वती ने came. कहा भाई मैं कोई वरदान दूं? भरत जी ने कहा So सरस्वती she तुम तो said, निकल ही जाओ, मुझे तो तुम्हारा दर्शन ही नहीं करना है। इसलिए अंतिम शब्द देखिए, न आन, न आन माने so he says सरस्वती that I don't मैं want तुम्हें any और benediction तुम्हारा now, मुझे चेहरा ही नहीं देखना। क्यों? क्योंकि तुम मेरी माँ की जीवा पर बैठी और मेरे because बाप you को वन sat भेज दिया। on मेरे my प्रभु को mother's तुमने tongue, सरस्वती नहीं जीवा पर and बैठी, because of सरस्वती you, नहीं भेजा ना, तुमने भगवान को वन में भेजा। तुमसे तो my मुझे कुछ नहीं चाहिए। brother, my मैं Lord, तुम्हारा was भक्त sent नहीं to है, exile, तुम्हारा दर्शन नहीं and my करना है। father died. हाँ यमुना ने कहा जन्म जन्म रति राम पद, मुझे ये चाहिए। सीधा हिसाब आपके सामने। सरस्वती क्या दे सकती हैं, माँ गंगा क्या दे सकती है, So यमुना this is what भक्त तो ये है यमुना we की। can get और जब by surrendering to the lotus ने feet मांगा ना, तब of यमुना Ganga जी ji and बोली, Yamuna ji. ये Then यमुना जी Yamuna का ji वचन है, says, these are the ताप words भरत of तुम Yamuna सब ji. विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। ये ताते भरत तुम तो साधु हो। Oh Bharat, कबीर you are a तुमसे great saint or sage, राम जी के चरणों में and अनुराग है और your नहीं love है। for the मैं Lord, यमुना आशीर्वाद देती हूँ, give you benediction that you will बार have बार manifold कहूँ मन माही, affection towards the राम lotus feet of the तुम Lord, सम राम ही को प्रिय नाही। मैं आशीर्वाद देती हूँ, and there will no राम other तुम्हारे who will जैसा be प्रिय, more favorite than तुमको you. राम जैसा प्रिय और कोई नहीं होगा। So he will be your favorite and you will be his मुकुंद favorite. रति वर्धिनी। So यमुना
We are speaking on this word, Mukund Rati Vardhini, the one who can manifest the love of Lord towards us. इस प्रकार से माँ यमुना भगवान के चरणों में प्रेम प्रदायिनी है। ऐसी So माता in यमुना this की way, कथा सुनने से she is the स्मरण provider करने से of the प्रेम लाभ love of the God, भरत जी को प्राप्त हुआ। as हरे Bharatji कृष्ण। got it from her. आप Hare सब Krishna. भक्तों ने You बड़े भाव all से have बड़े प्रेम listened से इस कथा को very सुना। carefully and patiently this बहुत katha. बहुत धन्यवाद। So I विशेष thank you धन्यवाद इस all. कथा के आयोजक I especially want to thank the organizers मनीषा माता, who have जीतू भाई, पूरब भाई, organized this katha उर्मिला माता, in दीपक भाई, the reverence मनीषा of भाई, their ancestors, ऐसे पावन Manisha Ben, भक्तों Purab का Bhai, आयोजन Deepak करके Bhai, Jitu Bhai, Vanila सब Ben, and संपूर्ण Amish Bhai. परिवार ने So, ये सुंदर कथा का आयोजन किया। and the बहुत whole धन्यवाद Patel गुरुदेव, family. हमारे I really want to प्रभु thank दर्शना माता, Pratik Prabhu, Darshana जिनके Mataji, बेटे जय और भूमि का भी their मैं son, स्मरण करूं। Jay, यमुना महारानी उन पर भी कृपा करें। बड़े बड़े that प्यारे बेटे हैं। Yamuna Maharani जय श्री माता, should bless अमरीश them. भाई, हिना Jai Shri माता, Mata, कुलीन Hina प्रभु, Mata, मोहिनी माता, Kulin Prabhu, Mohini उनके Mata, छोटे भाई कमलेश and भाई their और brother Kamlesh Bhai आप and सभी भक्तों को Bhavi. यमुना महारानी प्रेम प्रदान करें, So, भक्ति you प्रदान all करें। get the इस love प्रार्थना के साथ and shelter of आज Yamuna का Maharani. हमारे So let's पांचवा end अध्याय this session, विराम करेंगे। आज समय अधिक हो the गया fifth है, day. प्रश्न So उत्तर नहीं today होंगे। कल it's रविवार है, been कल our प्रवचन time, होंगे। and सुबह जय जयकार के साथ we'll आरती meet शुरू tomorrow होगी। early. छोटी सी सूचना, So हम after a सुबह small सुबह break, आरती और we will भजन संकीर्तन gather करेंगे। for the Aarti and Sankirtan.